Hello everyone. Today we will discuss about the joint Hindu family property. As we have discussed a little bit about what is joint Hindu family and what is co-partitionary. What is Mita? There are two schools. One is Dayabhaka and one is the Mitakshara. Now further we will discuss about the joint Hindu family property. किस property को जो है हम joint Hindu family property बोलेंगे, ठीक है? अब मिताक्षरा जो है इनको दो तरीके में डिवाइड करके रखा हुआ है। एक जिसको बोलते हैं अप्रतिबंधादया, unobstructed heritage, and second one is your प्रतिबंधादया, obstructed heritage. ये दो टाइप की प्रॉपर्टीज हैं जो कि मिताक्षरा स्कूल ने डिवाइड करके रखी है। नाउ property in which a person acquires an interest by birth is called unobstructed heritage. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि प्रॉपर्टी जिसमें कि किसी आदमी का बर्थ राइट हो, वो प्रॉपर्टी कौन सी हो जाती है आपकी? अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। बर्थ राइट किस में आता है हमारा? जिस प्रॉपर्टी में जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें हमारा बर्थ राइट आता है। बिकॉज द accrual of the right to it not obstructed by existence of the owner. इसका मीनिंग ये हुआ, सपोज कोई प्रॉपर्टी है जो कि पी ना मेरे सपोज बी प्रिज्यूम द पी जो है पी के पास जो है एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसका लड़का पैदा हुआ, जिस दिन से उसका सन एग्जिस्टेंस में आया उस दिन से उसका उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्या हो गया? राइट हो गया। जिस दिन से उसका राइट हो गया तो उसका जो राइट है उसमें बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन से accrual of the right to it not obstructed by the existence of the owner, mean to say जिसके नाम पे जो प्रॉपर्टी थी, जिसके पास जो प्रॉपर्टी थी, जो उसका पिता है, जो उसके पास जो प्रॉपर्टी थी जो एंसेस्ट्रल थी वो एग्जिस्टेड है, बट फिर भी जो उसका बेटा, उसके बेटे का बेटा जो आगे को पैदा होगा, एज आई एम लिटिल बिट डिस्कसिंग मर्जिंग हियर पार्शनली, they all have an interest and no one can obstruct it. This is unobstructed heritage. The right, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मोर क्लियर होता जाएगा। The right to it arise from the mere fact of their birth in the family. And क्या मतलब हुआ कि फैमिली में पैदा होने से ही राइट जो है वो आपका बन गया। एंड दे बिकम अ कोपार्टनर विद देयर पेरेंटल एंसेस्टर इन सच अ प्रॉपर्टी इमीडिएटली ऑन द बर्थ। जो मैं बात आपको बोल रहा था कि जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से ही वो जो है जो पेरेंटल एंसेस्टर इन सच अ प्रॉपर्टी इमीडिएटली ऑन द बर्थ, मतलब जिस दिन से वो पैदा हुआ उस दिन से ही वो अपनी जो पेरेंटल जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसमें उसका राइट बन गया, उसका राइट बर्थ होते ही उसका राइट जो है उसमें आ गया। ऑल प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड बाय हिंदू मेल फ्रॉम अ डायरेक्ट मेल एंसेस्टर नॉट एक्सीडिंग 3 डिग्री। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द कोपार्शनरी कि 3 डिग्री तक जितने भी आपके मेल आएंगे उन सब का उसमें क्या होगा? हिम इज कॉल्ड अप्रतिबंधादया। व्हाट इज दैट? अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज। लेट मी गिव यू द लिटिल बिट एग्जांपल, देन it will be more. Suppose P is the proprietor and it is the last holder. He has an ancestral property. P acquired an ancestral land. Got it? Now the day when his son born, S1, जब इसका लड़का S1 पैदा हुआ P का, तो जिस दिन से ये पैदा हुआ, द डे ही बोर्न, उस दिन से ही इस एंसेस्ट्रल जो लैंड है इसमें जो है इसका राइट आ गया। इसके राइट को रोक नहीं सकता। जैसे सपोज दया भागा में क्या होता है, दया भागा में ऐसा रहता है कि ये जो पी है, जब तक पी जिंदा है S1 हैज नो राइट, है ना? जब तक पी, मतलब अकॉर्डिंग टू दया भागा स्कूल चले तो इसमें इसका कोई राइट ही नहीं है S1 का, जब तक ये जिंदा है। अगर इन पर बट मिताक्षरा में पी हैज अ राइट अनलेस अंटिल
S1 has a right, चाहे P जिंदा हो. But in the Vaga, unless until P is not died, S1 has no right on the ancestral land. Can you differentiate the difference between the Mitakshara and the Vaga school? Property now. Property right to which accrues not by birth but on the death of the last owner with the living male issue is called the obstructed heritage. और आपके obstructed heritage आपके वो होते हैं right to which accrues, ये है लाइन में मेन इंपॉर्टेंट, right to which accrues not by birth, जो कि पैदा होने से नहीं मिलने वाले आपको, but on the death of the last owner without living male issue. जो आपका लास्ट जो आपका जो होल्डर है जब उसकी डेथ होगी तो ही जो आगे को उसके जो बच्चे होंगे उनका उस पे राइट बनता है, तो वो आपकी ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज आपको कहलाती है. इट इज कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज बिकॉज एक्रूल ऑफ द राइट टू इट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओनर. देखिए अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज में क्या होता था कि एग्जिस्टेंस ऑफ द ओनर का कोई मायने ही नहीं था कि मैं हूं, मेरे पास जो प्रॉपर्टी है जब तक मैं जिंदा हूं, तो अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज में तो भी जो मेरे बच्चा मेरा जो सन आएगा और उसका जो सन आएगा और उसका जो सन आएगा, उन तीनों का इसमें राइट बनता था चाहे मैं जिंदा हूं. बट अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज में जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकता. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन obstructed heritage. Thus, the property which devolves own parents, brother, nephew, uncle upon the death of the last owner is obstructed heritage. These relations do not take a vested interest in the property, but their right to it arises for the first time on the death of the owner. Now, co-partner can restrain the holder of a sapratibandhadaya from alienating it, while in the case of apratibandhadaya, it holder, so long as he is living, he absolutely right of alienation over it. He may gift it inter divorce or by will, he may sell it or mortgage. समझ रहे बा? ये बोल रहा है कि unobstructed heritage devolved by survivorship, obstructed heritage by succession. This is very important line. Very, very important line. If you able to understand this line, then whole the chapter will be clear. See, what is this line saying? Unobstructed heritage devolved by survivorship. देखिए अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज में आपकी कौन सी प्रॉपर्टी आई? सपोज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आ गई है ना. अब एंसेस्ट्रल जो लैंड प्रॉपर्टी इसमें आ गई, वो आपकी बाय सर्वाइवरशिप जो आपकी डिवॉल्व होती है. बाय सर्वाइवरशिप डिवॉल्व होने का मतलब है कि जो कंपार्शनरी आपके 3 डिग्री तक हैं वो उनमें इक्वली डिवाइड होगी. गेट इट? बट ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज में आपका बाय सक्सेशन आती है. ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज में सपोज कि जब तक ये बंदा ऑब्स्ट्रक्टेड, जिसके पास जो प्रॉपर्टी है, ऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज जिन प्रॉपर्टीज में हम मानते हैं उसके सारे के सारे राइट उसके एब्सोल्यूट रहते हैं. कब तक? जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए. द मोमेंट the person who has a obstructed heritage property, he died, then his or her legal heirs will acquire the property by succession. This is the very important line. The distinction between obstructed and unobstructed heritage is a peculiar only to Mitakshara school. According to Dayavaga, all heritage are obstructed for according to the doctrine of that school. No person, not even a son, takes an interest by birth in the property of another. Dayavaga does not recognize the principle of a survivorship. Joint family. The joint Hindu family is a purely a creature of a Hindu law, and those who own it are called co-partner. The property jointly acquired by a member of a joint family
with the aid of ancestral property, the joint family property. The Hindu joint family property is like a big reservoir in which property flowing from a various source and from which all members of the joint family drew out to fulfill their multifarious needs. समझ रहे बात कि the joint family property may flow into it from a various. I will discuss all the sources. Property according to Hindu law may be divided into two classes. One is your ancestral and one is your self-acquired property. अब इसमें one is ancestral land जो है आपका, वो कब कब कैसे कैसे आपकी जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन किन 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 प्रॉपर्टीज को हम एंसेस्ट्रल लैंड बोलेंगे. अब लेट आई विल डिस्कस इट नाउ. All property inherited by Hindu male from his father, father's father, or father's father is an see. All property inherited by Hindu male from his father, ठीक है, father's father, ठीक है, और father's father's father. देखो ना अप टू 3 डिग्री जो आपका 3 डिग्री जो कंसेप्ट है वही आपका यहाँ चला हुआ है. Incompassionary is in ancestral as regard his male issue. This situation has been changed after the Amendment Act of 2005. Later we will discuss. Even enough it was inherited by him after his death of a life tenant. A father cannot change the character of a joint family property into absolute property of his son by merely making a bill and bequeathing it or a part of it to the son as if it was the self-acquired property of the father. In the hand of the son, the property will be ancestral property, and the natural or adopted son of that son will take interest in it and be entitled to it by survivorship, joint family property. See, here is a very important line I have read, that is, a father cannot change the character of a joint family property into absolute property of his son by merely making and a bill. Can you understanding this line? Suppose I have a property, ancestral property. Keep in your mind only the, and because we are discussing about the ancestral property, अपने बेस से नहीं घूमना है, वहीं पे रहना है. हम ancestral property के बारे में बात कर रहे हैं ना. Suppose मेरे पास ancestral property है, उस ancestral property को मैंने क्या किया, मैंने अपने बच्चे को मैंने अपने सन को बिल कर दी. अब बिल कर दी तो बिल करने से क्या हुआ, I try to change the nature of the property because the moment I bill, मेरे मानने से तो ये हो गया कि वो एब्सोल्यूट हो जाएगी उसकी. बिल करूं मैं उसको, गिफ्ट करूं, या मैं यहाँ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को किसी और को दे दूं, तो वो उसका एब्सोल्यूट ओनर बनने एज इन जनरल इफ हम बोलेंगे कि वो एब्सोल्यूट ओनर बन जाएगा. बट नहीं, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का जो नेचर है वो चेंज नहीं हो सकता. वो एंसेस्ट्रल लैंड ही रहेगी. किसके लिए एंसेस्ट्रल लैंड रहेगी? कीप इन योर माइंड, टू द 3 डिग्री कोपार्शनर्स. A father cannot change the character of a joint family property into absolute property of his son by merely making a bill कि भाई तू absolute owner है ना, तू अब इस प्रॉपर्टी को जो मर्जी वो कर. वैसा नहीं हो सकता क्योंकि the moment ancestral property मेरे पास आती है तो उसमें सिर्फ मैं, अगर मेरा बेटा उस टाइम एग्जिस्टेड है और उसके बेटे का बेटा एग्जिस्टेड है, तो I already told you in the last lecture, 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3 will be divided within us, and I can only absolute owner of 1/3, not whole property. In the now, in the hand of the son of the property will ancestral property, and the mean to say nature cannot be changed by the father. This is what the story I have discussed, that is discussed in Avtar Singh versus Thakkar Singh. And this is also important. Chalikani Venkaya versus Venkatar Annayama. These are the important cases. Now this is Muhammad Hussain Khan Bazi Babu Ki Sham. I will provide you PDF. Basically,
This is all about. Now, son takes at his birth in the ancestral property is a wholly independent of his father. It does not claim through the father, and therefore a transfer is allowed by law. Cannot affect the interest of the son in the property. However, the father has a special power of disposal of ancestral property for a certain purpose. The father has a power of making within the reasonable limit gift of ancestral movable property without the consent of his son. A Hindu father or of the other managing member has a power to make a gift within reasonable limits of the ancestral immovable property for a pious purposes. A member of a joint family cannot dispose of by bill a portion of the property even for charitable purposes, and even if the portion of the property bears a small portion to their entire estate. Got it? Now, the property acquired by the aid, assistance, of the ancestral property, and it is known as the doctrine of assertion. See, what is the doctrine of assertion? Doctrine of assertion ये बोलता है आपका कि ये जो assertion where the term जो ये here the term assertion has been used in a wider sense including all income, और in it ordinary meaning अगर हम इसका लें कि assertion mean accumulation of income of the joint family property with the joint family income and proceed of the sale of a joint family property or property purchased out of such sale proceeds. Any property acquired by a karta out of his own income in the name of his son will not mean to say कि जो भी आपका जॉइंट फैमिली इसमें जो भी आपने जो है एड और असिस्टेंस ली किसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की, तो वो भी जो है आपकी जो उस असिस्टेंस से आपकी जो प्रॉपर्टी जो आगे को जो उसका प्रॉफिट आएगा या कुछ भी फ्रूट आएगा, तो वो भी जो आपकी जॉइंट हिंदू फैमिली वो भी जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी. सपोज मैंने जॉइंट हिंदू फैमिली मैंने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचा और उससे पैसे जो उस पैसे से मैंने क्या किया, कहीं मैंने गांव की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेचा और उस पैसे को लेके मैंने एक शहर में मकान बना दिया, उसको किराए में चढ़ा दिया. तो उससे जो प्रॉपर्टी जो अर्न हो रही है, द व्हाटएवर द प्रॉफिट आई एम गेनिंग फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी, दैट अर्बन दैट प्रॉपर्टी that will be added into the joint ancestral property. This is what is saying the doctrine of assertion. And same meaning property acquired at the cost of the ancestral property mean to say कहीं पे आपने क्या किया, ancestral land था आपका बहुत से ज्यादा, आपने उसको बेचा और कहीं और लैंड ले लिया, है ना? तो वो जो आपने नया लैंड लिया ये मैं नहीं माना, इट विल नॉट डिटरमिन कि दैट लैंड यू परचेज्ड इज योर ओवन लैंड. दैट इज आल्सो नोन दैट द नेचर ऑफ दैट लैंड आल्सो एंसेस्ट्रल लैंड. नाउ the last one is your property, separate property of occupational, which is a voluntarily thrown in the common stock to such an extent that it cannot be distinguished from the joint family property. Doctrine of blending, it's a very important. इसमें कुछ नहीं होता है. डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग में ये है कि when a occupational deal with his separate property in a manner that he leave no doubt that he wants to treat it as a part of a joint family property, such property become a joint family property. समझ रहे? Suppose I am the karta of the family. Later I will discuss the karta. Suppose I am the karta of the family. कर्ता कर्ता आप ऐसा मान लो कि फैमिली का सबसे बड़ा हेड, सर्वोपरि जो करता है. तो मैंने क्या किया, अपनी सेपरेट अर्निंग से कोई जमीन ले ली, ठीक है, बट
उस जमीन को मैं अकेले मतलब सिंगली नहीं बेचता हूं, मैं उसको अपनी जो फैमिली है या जो हम जिस फैमिली ज्वाइंट हिंदू फैमिली है वो सब मिलके उसको बीज रही हैं। उसका जो फ्रूट है, उसका जो वट एवर द प्रॉफिट आई एम अर्निंग, वट एवर द फ्रूट आई एम गेनिंग, वी आर शेयरिंग इक्वली ऑल दैट। तो इन जनरल एक कॉमन प्रूडेंट मैन की प्रिजम्पशन ली जाए तो व्हाट आई विल से इट्स अ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी। So that is also known as a ancestral land. Now, that is also that is known as the doctrine of blending. कौन कौन सी डॉक्ट्रिन आ गई? डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लेंडिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ डेट्रीमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ असर्शन। ठीक है, accretion, sorry, doctrine of accretion, it's not assertion but it's a doctrine of accretion। एक्वायर कैसे किया आपने? सेपरेट प्रॉपर्टी, it's a very no need to go in a very detailed. Property acquired in any of the following ways is a separate property of the acquirer. It is called the self-acquired property. Following are the some examples of a separate property: obstructed heritage, जो भी आपकी obstructed heritage आएगी, a gift of a small portion of ancestral movable made through affection by a father to his male issue in his separate property। समझ रहे? A gift of a small portion of ancestral movable made through affection by a father male issue in his separate property, or property granted by government to a member of a joint family, ancestral property lost to the family and recovered by a member without the assistance of a joint family property, then it is also known as a separate property। Income of a separate property, property obtained as his share on a partition by a co-partner who has no male issue, property held by a sole surviving co-partner when there is a no widow in existence who has a power to adopt। ये कंसेप्ट समझ आ रहा है आपको? ये दिस वन कि property held by sole surviving co-partner when there is a no widow in existence who has a power to adopt, है ना? कि कोई ऐसी विडो है जिसको पावर ही नहीं है अडॉप्ट करने की। पावर कब नहीं रहती है? We will discuss in a adoption act. Separate earning of a member of a joint family, gains of a learning. This is all about the joint Hindu family property, and it is the case Dippu versus Bashan. Plaintiff sued to recover a possession of the property which belonged to her brother who died। Plaintiff sued to recover possession of the property which belonged to her brother, जो कि उसको भाई के बिलोंग करती थी, वो जो कि मर चुका है। She claimed to be the nearest heir। The defendants, the son of the parental uncle, contest that they were a preferential heir according to custom, as the whole of the land was ancestrally in the hand of the deceased। The court said that property in the hand of the deceased are a property which originally belonged to his ancestors, but deceased was the last male holder of the property and he had no male issue. There was no surviving member of a joint family, be it a descendant or otherwise, who could take the property, the property inherited from paternal ancestors is, of course, ancestral property as regard the male issue of the propositus, but it is his absolute property and not ancestral property as regard the relation. It was held that the defendant were collateral of a deceased and the regard them the property was not ancestral property, and hence the plaintiff was the preferential heir। इसमें कुछ नहीं बात बोली गई है, इसमें इतनी सी बात बोली गई है कि जो प्रेफरेंशियल ईयर है वो प्लेंटिफ है। और वो क्यों है प्रेफरेंशियल ईयर? क्योंकि उसका आगे कोई मेल इशू नहीं रहा, उसके आगे कोई मेल इशू नहीं रहा, तो जो प्रॉपर्टी उसके हैंड में आई वो कैसी रहेगी? मतलब सर्वाइवरशिप का जो कंसेप्ट है ना वो नहीं चलना है यहाँ पे। प्रॉपर्टी इसमें प्रेफरेंशियल रील सक्सेशन के थ्रू आ रही है।
It is absolute property and not ancestral property as regard the relations. It was held that defendant were collateral of a deceased, and as regard them, the property was not ancestral property, and as the plaintiff was the preferred. ये देखो ना ये बात, there was a no surviving member of a joint family. If you guys are not able to understand what I have studied, or otherwise there is some weakness, then you can mail me, then you can call me, you can contact me in any mode. I'm always available for you. Thank you. And very soon now we will move to, if you guys like and give me response, then I will move to another important topic, that is the right and power of kartas and compassioners. There are some cases, मक्खन सिंह वर्सेस कुलवंत सिंह, इसमें क्या बोला गया था कि जो प्रॉपर्टी है, a property could not be presumed to be joint Hindu family property merely because of the existence of a joint Hindu family. There one who assert has to prove that the property था, देखो इसमें बोला गया कि सब मिलके इकट्ठे रहते हैं किसी प्रॉपर्टी में, तो अब ये नहीं माना जाएगा कि भाई ये जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसको जो बोल रहा है कि भाई नहीं, दिस इज जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, देन ही हैव टू प्रूव, इट इज द बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन हिम. This is the decided in the Makhan Singh versus Kulwant Singh. Now one more case is your Srimati Dippo versus Basant Singh. इसमें क्या बोला गया? The property held by a sole surviving co-partner may constitute his separate property, and on his death it will devolve by succession on his heir, and any custom giving preferences to collateral would be void. The character of the property varies depending upon who the claim. सीधी सी बात है, अगर इसमें मैं आपको मोटा सा बता दूं, मैं हूं, मेरे पास मेरी एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, और आफ्टर माय डेथ मेरे कस्टम के हिसाब से जो मेरे कोलेट्रल हैं उनको ये प्रॉपर्टी जाएगी, बट नहीं, बट अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, अगर दिस प्रॉपर्टी इज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, in that sense this property will be devolved according to the succession, not this property will not goes to the collaterals. Thank you.